मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी की इन पंक्तियों के साथ मैं रौनक गुप्ता, क्रिएटर एंड क्राफ्टर ज्ञानी रुद्रा, अपनी पूरी टीम की ओर से अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर ज्ञानी रुद्रा के सेकेंड एनिवर्सरी इवेंट एक्सप्रेस योरसेल्फ टू रीइन्वेंट योरसेल्फ में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड दिस इवेंट इज सपोर्टेड बाय जीरो मॉन्क। ज्ञानी रुद्रा is an initiative to help people, especially young minds, through sharing of thoughts and identifying their real and hidden potential that directs them towards the path of true happiness and well deserved success in their life. Our goal is to motivate all the human lives to find their true purpose of existence. For more details about us, definitely you can feel free to connect with us through our website and social media handles. Further, Zero Monk is a startup and aims to assist students to grow and achieve their career objectives through helping them in preparing for jobs, connecting with the mentors of their fields, and definitely they are to make the college life of students 10 times better than the previous. Now, coming over to our our anniversary event, that is Express Yourself to Reinvent Yourself. And that is the brainchild of Gyaannirudra in form of its anniversary event to celebrate the emotions of individuals in form of their experiences to further help them in connecting with their inner self for a peaceful personal and successful professional life. As part of it, we invite individuals from all age groups to share their creations from their life experiences in form of stories, poetries, photographs, artworks of all forms, such as paintings, drawings, sketches, etc., to celebrate life with us every year on a regular basis for our anniversary competition. And for this year anniversary competition, we have with us Mrs. Kesar Patel, Mr. Alok Tonk, Ms. Deepa Gupta, and Mr. Somadeep Pramare as our esteemed panel of judges. And now let me take few minutes to share the highlights from their glorious and splendid career with you all. So let's start with the introduction of judges. Mrs. Kesar Patel has a vast experience of 22 years in the field of education and believes that innovation in education is the need of hour. She is currently working as a principal at GD Goenka Public School, Darbhanga, Bihar. She is also the recipient of a national award in teaching from MHRD in 2019 for her great contribution to the community. While Mr. Alok Tong is on a mission to help people live a life that is stress free, full of clarity and confidence by integrating strategic mindfulness principles and frameworks. He is the founder of Eastern Mindfulness, a mental wellness platform, and Mindfeed app. In the past 7+ years, Alok has closely worked with several organizations like Amazon, HCL, Cisco, Religare, HPCL, Continental, to name a few, and touched more than 40,000 lives via his seminars, webinars, and personal coaching programs. Our next judge, Ms. Deepa Gupta, is a national level artist and research scholar at Bundelkhand University, Jhansi. She has been awarded a gold medal during her Master of Fine Arts. She is also a member of Sanskar Bharati and has experience in various types of art through many national exhibitions, conferences, seminars, and workshops for last 7 years. And now coming to the youngest judge of our competition, Mr. Soumyadeep Primare. He is an artist, writer, and one of the youngest artists who passed Nikhil Bharat Sangeet Samiti fourth year exam while being in class 2. He has also been one of the teammates of Kanya Shri Project Art winner, having around 17 years of experience in drawing, arts, and craft. He worked in various temples as a sculpture artist, as designer, and movie analyst. He is presently the CEO of Zero Monk. And definitely, they all have put their hearts and soul to help us identify some of the exceptional entries of the competition
to further announce them as winner and runner-up for the competition. We are very grateful for your efforts and delighted to have you all with us today. I once again welcome you all to our anniversary event. Welcome Alok, welcome Deepa and Somnadeep. And definitely Mrs. Kesar Patel couldn't join us today due to some other priorities. So I definitely welcome her also in absentia. And now, without any further delay, let's begin the session first with a little idea about the theme of the event, as it is express yourself to reinvent yourself. So, with the kind of race we are running in this 21st century to achieve more and more in the terms of numbers, almost in all aspects of life, whether they are marks, whether that is career, that is money, or even anything else which you could understand as an aspect of life. And we have somehow forgotten to express ourselves in our true selves, to further connect with our inner self. And this has somehow created a lot of pressure, anxiety, depression, and stress, and the similar kind of problems in our lives, which has further blocked our progress for a peaceful personal and a successful professional life, and left us with a never ending rat race of fulfilling our aspirations and dreams. Express yourself to reinvent yourself is our small attempt in form of Gyaannirudra anniversary event to celebrate the emotions of individuals in form of their experiences to further help them in connecting with their inner self for a peaceful personal and a successful professional life. Although, when it comes to expressing oneself in their true sense, some can express themselves better through their writings, artworks and paintings, photographs, while others can express themselves better through their involvement in singing, dancing, sports, or any other interest-based activities. Important thing is here that is not the kind of activity, but the kind of involvement one is having with the activity and how that activity is helping them in releasing their emotional blockage to get relief from the stress of the fast-paced, ambitious world. So once they get relief from the emotional baggage that they were carrying on their head through such involvements, it becomes easy for them to embark on their journey for excellence with clarity and courage. So with the hope and an attempt to contribute a bit of our efforts in making this world a better place, now I request our judges to share their views or experiences from their life around the theme to enlighten the participants and community for their better future. And to begin with, let's start with Mr. Alok Tong. First of all, thank you, Ronak. Thank you very much for having me as one of the panelists and judges. I'm really humbled to be here. And I'd like to extend my gratitude to you, Ronak, for whatever you're doing, this entire initiative that you have taken up. And if you see the kind of times that we are going through in the past 2.5 years, 3 years, whether it is about the pandemic, the kind of challenges that we are experiencing due to the ups and downs, these kinds of platform, they really revive our mindset. They really provide that opportunity for people to come up and showcase their skill sets. And as you rightly said, that, when you express, it can be in any form. It can be art, it can be dance, it can be speaking, it can be any aspect. And that helps in releasing a lot of pent-up emotions. And that can give a birth to the new you, right? And that's what you're talking about, to redefine yourself. So, Ronak, what I think and how I look at expressing yourself to reinventing yourself is, I think, Ronak, expression is very powerful. It is very powerful. It is one of the tools that we have got to change our lives as well as the life of others, right? The thing is, if you see, we are unique individuals. All of us are unique. You are unique. I'm unique. People here are unique. All our participants are unique. Everyone who is here are unique. And we have our own way of looking at the world, right? But the thing is, unfortunately, the kind of conditioning that we have gone through right from our childhood, we start looking at the societal standards कि ये ऐसे ही करना है,
इसको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही देखना है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसे करना है ना, यहाँ पे जाना है, वहां पे नहीं जाना है। सो इतनी सारी कंडीशनिंग हमारी हो रही है, कहीं ना कहीं रौनक होता यह है दैट वी लूज अवर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन and we start following the societal standards which are set for us. And then, because of this, we somewhere lose the connect with who we are really inside, you know. And that's where platforms like this can really help individuals to start expressing themselves, because when you express, you bring in a lot of clarity of who you are, what you really like, what motivates you, what inspires you, and you start shaping your new reality. And that's how you start inventing yourself. So Ronak, I think even I was lost in my journey somewhere back when I was doing a job, and I started looking at, you know, how the life is and how the world has set the standards. ऐसे ही करना, ये एज पे ये जॉब लग जानी चाहिए, इसके बाद शादी हो जानी चाहिए, इसके बाद ये हो जाना चाहिए. And I was lost. But when I reflected, because I'm a mindfulness coach, I'm a meditation coach, I've been practicing mindfulness and meditation right from the age of 15. And during my practices, I got many realizations, a lot of clarity. And that's where I thought, let me leave this and start coaching people to optimize themselves. क्योंकि जैसे आपने कहा कि stress, depression, ये सारा कुछ बहुत हो रहा है. And it's important that we have tools and techniques that can help us to express ourselves, and in the process we reinvent ourselves. So this is how actually I have done it in my life. And once again, Ronak, right from the bottom of my heart, I do thank you and your entire team for doing whatever you are doing. More power to you. Thank you. So thank you, Alok, for sharing some of the insights from your experience. And definitely, I will come back to you after having views from other judges as well to have some Q&A from the audience as well. So now let's proceed towards Deepa Gupta to have her views regarding what she thinks about express yourself to reinvent yourself. First of all, I want to just thank you all and very, very congratulations to you for the anniversary of your team. And really, I'm grateful to being a part of this event. This is a great opportunity for me for the very first time for me. So, first of all, I want to just come to the theme of the day. Like you just say, just express yourself and reinvent yourself. So, yeah. I'm an artist, okay? So through my eyes, I want to just say कि आप जो भी चीजें देखते हो उन्हें देख के आप कुछ फील करते हो, ओके? सो आप जब वो चीजें फील करते हो और वो चीजें आप किसी के सामने एक्सप्रेस करते हो, so this is the real you, not that if someone is saying that कि through the another's eyes, okay? कि सोसाइटी में ये चल रहा है या फिर क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. दिस इज just depends on you, how you are creative for yourself, how you are doing for yourself, how you are being very good for yourself, what is your own nature for your inner soul, and what you really just making yourself. Okay, so for future आप अपने लिए दूसरों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा important है. Okay, as sir says before me, कि समवेयर जब हम अपने कैरियर पॉइंट के पीक पे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को लॉस कर देते हैं समवेयर, कि हम किसी ना किसी सोसाइटी के अंडर प्रेशर या फैमिली प्रेशर या फिर एक एज पे हमें लगता है कि नहीं अभी हमें कैरियर को देखना चाहिए और वो थोड़ा सा मनी माइंडेड हो जाते हैं हम, कि नहीं पहले जॉब प्रायोरिटी होनी चाहिए. फिर आफ्टर जस्ट व्हेन वी जस्ट गोइंग थ्रू दिस ट्रैक, कि जब हम जॉब में जाते हैं फिर हमें समझ में आता है कि नो दिस इज नॉट द रियल पीस व्हाट वी वांट एक्चुअली. तो फिर हमें लगता है कि नहीं ये नहीं है वो जो हमें चाहिए था एक्चुअली में. फिर हमें चाहिए होता है हमारा खुद का सुकून, जिसे हम बोलते हैं कि माई सेल्फ एक्सप्रेशन, वही कि जिसे हम खुद में ढूंढते हैं कि मेरी खुद की खुशी किस चीज में है. तो वो सिर्फ एक फॉर्म में नहीं हो सकता है कि आप डांस करके अपनी खुशी को कभी, तो ये किसी एक फॉर्म में नहीं होती आपकी एक्सप्रेशन की. नहीं, कभी आपका मूड कुछ होता है, कभी आप गाने के थ्रू अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं, कभी डांस के थ्रू, कभी पोइट्री के थ्रू, कभी स्टोरी टेलिंग, कभी तो सिर्फ म्यूजिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा हीलिंग पावर काम करता है. वो भी आपको काफी ज्यादा बूस्ट ऑफ एनर्जी देता है. कभी आर्ट वर्क.
तो आर्ट वर्क्स में ये नहीं है कि आप हमेशा एक फाइन एंड टच लाइंस पे ही आपको काम करना है, वही सिर्फ आर्टिस्ट। नो, the artist is one who just express their feeling with the color only can, लाइक कि आप अगर कलर भी फेंक रहे हो तो वो भी आपकी अनकॉन्शियस माइंड को भी बताता है कि आपकी ब्रशेस की स्पीड क्या है, आपकी लाइंस क्या है, आपकी रिदम क्या है उसमें। द कंपोजिशन ऑफ द आर्ट इज जस्ट डिपेंड्स ऑन योर माइंड। ओके, सो ऑब्वियसली इफ आई एम जस्ट सेइंग कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। नहीं, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें कोई भी एज का बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशंस के लिए आपको किसी एज की जरूरत नहीं है, जस्ट योर माइंड ओनली। सो कोई छोटा हो बड़ा हो, सबकी अपनी फीलिंग होती है किसी एक टॉपिक को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके, अपनी सराउंडिंग्स को लेके। So this is a very good platform to the achievers who just want to be a very good in the future. And I'll just say the good luck for your team and the participants also. And thank you so much for just giving me such opportunity. And thank you Thank, a lot. thank you, Deepa, for enlightening with your words. And definitely, I will summarize with what you said later on. But let's come to Swamidi. So again, for Swamidi, also like how he sees that expressing himself to reinvent himself, like how it is important through arts and drawings or paintings or whatever he thinks. एक्चुअली सर मेरे हिसाब से आर्ट को मेरा देखने का नजरिया थोड़ा अलग से है। मतलब मैं जब बहुत छोटा था, जब बहुत अच्छे से दुनिया को देखता था, तो तब बहुत मैंने दुनिया में बहुत ज्यादा केओस देखा। तो उस केओस का बीच में भी एक अलग सा शांति होता है अंदर का, जो अपने आप से रियलाइज कर पाना बहुत जरूरी है। जैसे आज मैं हरिद्वार पे हूँ, तो यहाँ पर बहुत जगह पर गाड़ी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग पागलों के जैसे भाग रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, वो के लिए, पर किसी का मन में वो अंदर का वो ठहराव भी नहीं है कि हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है, ये पता ही नहीं है। और आर्ट इज लाइक दैट कि जो उस रास्ते को ढूंढ दे कि हमें जाना कहाँ है, हमारा एट द एंड गोल क्या है, उसको रियलाइज करना अपने अंदर ही एक आर्ट है। जैसे पिकासो को अपना ड्राइंग को देख के, जो क्यूबिज्म पिकासो ने बनाया था, तो उसको देखने का नजरिया ही कुछ और था। उन्होंने अपना ह्यूमन इमोशंस को, जो दुख है, उसको अलग अलग वे में तोड़ के उसको ऐसे एक कैनवस में बना दिए थे कि जिससे लोगों को वो फील होने लगे कि सच में इसमें इतना दुख छुपा है, इतना दर्द छुपा है, इतना खुशी छुपा है, कि जो इंसान खुद महसूस कर सकता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या गलती करते थे, हम ट्रेडिशनल आर्ट सीखने चले जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम वही नॉर्मल वे में चलते हैं, हम आर्ट को रियलाइज करने का कोशिश नहीं करते अंदर से। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आर्ट को हम समझ ही नहीं पाते। और आज के डेट में धीरे धीरे आर्ट बिजनेस बन चुका है। तो दैट्स वाई क्या हो रहा है कि मार्केट में आर्ट कोई दूसरा वे में बिकता है। आज के डेट में अगर मूवी मेकिंग पे भी दिखा जाए सर, तो बहुत अच्छा अच्छा मूवी बनता है, पर वो चल नहीं पाता है क्योंकि लोगों का ध्यान उसमें है ही नहीं। जलीकट्टू जैसे मूवी, असुरन जैसे मूवी चल ही नहीं पाए इंडियन मार्केट पे। अगर पुराने टाइम पे भी दिखा जाए तो सत्यजीत रे का पत्थर पचाले उतना चल नहीं पाया था, पर उससे ज्यादा बहुत हिट कर गया था बंगाल में और भी बहुत सारी मूवी। कल सत्यजीत रे का बर्थडे था, वो भी उतना उस लेवल पे मनाया नहीं जाता है कि उसका आर्ट को लेकर उतना चर्चाएं नहीं होता है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिखा जाए तो सिर्फ उसका जो सक्सेस पार्ट है उसको लेके ही बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, पर उन्होंने जो अपने थॉट्स को बोलने का कोशिश किया है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। ये तो सर इसलिए मेरे को लगता है कि आपने जो प्लेटफॉर्म दिया, तो यहाँ आके क्या हो रहा है कि हर किसी का अपना जो अंदर का वो है, वो कोई आके एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इससे सबसे अच्छा ये हो रहा है सर, हर किसी को पता चल रहा है कि अलग अलग लोग सोचते कैसे हैं। तो एक कम्युनिटी बिल्डअप हो रहा है जो आगे जाके हमें बहुत मदद करेगा कि एक अच्छा दुनिया बनाने के लिए। जो लोग सिर्फ एक बाहर का जो चंचल दुनिया है उसी को नहीं देखेगा, अंदर का जो ठहराव है उसको महसूस करने का कोशिश करेगा। जैसे धीरे धीरे जाके हमारा सोसाइटी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, कैसे दूसरों के लिए जीना है सीखेगा। तो आर्ट एक जीने का माध्यम भी है मेरे को लगता है सर। अब सर आप बताइए सर, आपको कैसे लगता है? डेफिनेटली सौम्यदीप, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। एंड इन बिटवीन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इन बिटवीन इफ anyone wants to ask any question, then they can leave it through the chat box, or even they can
unmute and then speak their questions as well, right? So let's come to the point. जैसे सौम्यदीप ने कहा कि अभी हरिद्वार में है, and this is really true. भीड़ बहुत है, लेकिन एक कहते हैं ना कि आपको खुद पता नहीं है कि आप किस तलाश में जा रहे हैं. आप मंदिर जा रहे हैं, आप मस्जिद जा रहे हैं, आप सब जगह जा रहे हैं. आई डोंट थिंक, मतलब एक ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, बट कहीं भी आप जा रहे हैं, सो अल्टीमेटली बट यू आर नॉट इवन फाइंडिंग. आप वहां जा रहे हैं एंड देन इट्स अ काइंड ऑफ अटेंडेंस. आप गए 5 मिनट, आप रुके एंड देन कम बैक. So that is not the kind of feeling or emotions that you attach कि आप उस प्लेस पर किस पर्पज से गए. 5 मिनट भी अगर आप गए या 10 मिनट भी गए तो आप सुकून के साथ बैठे या नहीं बैठे. सो दैट इज द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट. एंड अगेन, जैसे मैंने अभी जब थीम के बारे में मैं कह रहा था, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली कि आप किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, वेदर यू आर in a public speaking or whether you are what I can say the artist, photographer और कुछ भी आप singing, dancing, कुछ भी आप करते हैं. Important is not the kind of activity, important is the kind of involvement. क्योंकि जब तक हम अपना इन्वॉल्वमेंट कंप्लीटली अपने ट्रू सेंस से किसी एक्टिविटी में नहीं देंगे, डेफिनेटली हम अपने आप को रीडिफाइन या रीइन्वेंट नहीं कर पाएंगे. बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस पर्सनली, जब हम किसी एक्टिविटी को पर्टिकुलरली टाइम दे के एंड अपने ट्रू सेल्फ से या ट्रू सेंस से इन्वॉल्वमेंट देते हैं, डेफिनेटली आपको पता भी नहीं होता है एंड स्टिल यू फाइंड lot many ways to express yourself and lot many ways to discover yourself and grow yourself. आप इवन इमेजिन नहीं कर सकते कई बार. इवन आई कुड नॉट इवन इमेजिन कि किस तरीके से चीजें सिंक्रोनाइज होती हैं वर्ल्ड में, किस तरीके से चीजें आपको डायरेक्शन मिल जाती है. यू इवन कांट प्रेडिक्ट कि किसी स्ट्रक्चर से वो डायरेक्शन मिलती है. इट्स ओनली इम्पॉर्टेंट कि जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू एनी ऑफ द एक्टिविटी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड रीडिस्कवर योरसेल्फ. एंड जैसे दीपा ने कहा कि आर्ट इज नॉट सिंपली कि भाई आप कितना अच्छा कलर कर रहे हैं या किस तरीके की पेंटिंग बना रहे हैं. इट्स द काइंड ऑफ कि आपकी ब्रश की स्पीड क्या है, आप कलर किस तरीके से स्प्रिंकल कर रहे हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स डिफाइंस कि आपके उस समय इमोशनल या कह लीजिए आपके माइंड में क्या चल रहा है, कितने टर्बुलेंस से आप जूझ रहे हैं. क्योंकि जितना ज्यादा टर्बुलेंस होगा, मे बी आप उतना ज्यादा चीजों को कलर करना चाहेंगे, चीजों को स्प्रिंकल करना चाहेंगे, so that you can release your emotions in any way or in any form, no matter कि वो आपको लास्ट में जो आउटपुट आएगा ड्राइंग का या आर्ट वर्क का या पेंटिंग का, वो आपको अच्छा लगे भी या आपको अच्छा लगे तो बाकियों को अच्छा लगे या नहीं लगे. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सारा का सारा टर्बुलेंस उस पर्टिकुलर ड्राइंग पे, उस पर्टिकुलर कैनवास पे निकाल देना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली जैसे आलोक ने कहा, दैट इज वेरी कॉमन एंड वेरी रेलेवेंट प्रॉब्लम कि भाई ठीक है, एक टाइम पर आपको बैचलर्स करनी है, मास्टर्स करनी है, देन आपकी जॉब लग जानी चाहिए, देन आपकी शादी हो जानी चाहिए, फिर ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटल स्टैंडर्ड्स जो कहीं ना कहीं आपका जो एक नेचुरल रिदम है, नेचुरल मोमेंटम है, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है. मे बी आपके लिए प्रायोरिटीज अलग हों, आपके लिए स्ट्रक्चर्स अलग हों, बट कहीं ना कहीं क्या है कि वो एक सोसाइटल स्टैंडर्ड्स की वजह से हम अपने स्ट्रक्चर्स इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि हम उन चीजों को ब्रेक नहीं कर पाते. एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक एज दीपा हैज आल्सो मेंशन, कि जॉब लग जाती है, पैसे आने लगते हैं, स्टिल यू फील कि नहीं यार, कुछ तो मिसिंग है, देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग इन अस. सो टू फाइंड दैट मिसिंग एलिमेंट, दिस इज आवर स्मॉल अटेम्प्ट कि जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ. देयर इज नथिंग, इवन इफ आई विल टेल यू ऑनेस्टली, व्हाइल एंट्रीज वर कमिंग इन द पास्ट 4 or 5 months, जब एंट्रीज आ रही थी, जब एंट्रीज में अप्रूव कर रहा था, so there were a lot of entries which we could say कि maybe उतनी अच्छी हैं या नहीं है, but I had never thought in that sense कि इन्हें अप्रूव करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए. But they are the emotions, they are the feelings of the person, and when it comes to feelings, there is nothing good or nothing bad. It's only that what you are expressing and how you are transforming in your journey. And now coming back to Alok, so to get some more insights into how you exactly what I can say, how you exactly recovered yourself from that particular phase of turbulence in your particular career. The thing is, रौनक, एक चीज जो हम भूल जाते हैं अक्सर, वो है कि एक शब्द मैं बोलूंगा, वो है वैलिडेशन. किसी भी चीज को हमें वैलिडेट करना बहुत जरूरी है. जब कभी भी आप कोई संघर्ष से गुजर रहे हैं, if there is some kind of turbulence, if there is some kind of challenge, any problem that you're experiencing in your life,
and the kind of emotion that you are going through at that moment of time. तो सबसे पहले तो उस इमोशन को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है कि मैं क्या फील कर रहा हूं, व्हाट एम आई फीलिंग. क्योंकि अगर आप एक चीज देखें, वी आर वेरी वीक इन टर्म्स ऑफ अवर इमोशनल लिटरेसी और इमोशनल वोकैबुलरी, है ना. कुछ चंद चीजें ही हमें पता है, जैसे सैड, हैप्पी, एंगर, फियर. वी जस्ट नो फ्यू names of the emotions. And when we fail to validate our emotions, we fail to manage them. So when I was going through those stressful times during my job, because I was in sales, so sales पे तो ऐसे ही प्रेशर होता है सेल्स वालों को, है ना. बॉस का प्रेशर, क्लाइंट का प्रेशर, टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं उसका प्रेशर. तो there was a lot of turbulence, lot of stress, lot of anxiety. But only because of my mindfulness and meditation practices, Ronak, I was able to take that pause every day. Taking that pause, practicing, going inward. क्योंकि अगर आप देखो ज्यादातर टाइम हम बाहर हमारा फोकस होता है, काम पे फोकस होता है, घर पे फोकस होता है, दोस्तों पे फोकस होता है, सोशल मीडिया पे फोकस होता है, बाहर की ओर फोकस होता है. लेकिन जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तभी आप अपने फोकस को अंदर की ओर चैनलाइज करते हो. आप अपने फोकस को अपने थॉट्स की तरफ चैनलाइज करते हो, अपने इमोशंस की तरफ चैनलाइज करते हो, अपने बिलीफ सिस्टम्स की ओर चैनलाइज करते हो, अपने एटीट्यूड की ओर चैनलाइज करते हो, अपने परसेप्शंस की ओर चैनलाइज करते हो. तो रौनक, when I was going through all those turbulences, my practices made me validate my emotions. Why am I feeling what I'm feeling? Am I feeling anxious? Yes. Why am I feeling anxious? I'm feeling anxious because शायद ये नहीं हो पाएगा, शायद मैं वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं वो डील क्लोज नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कल मैं कैसे परफॉर्म करूंगा कि नहीं. सो ये जो अनसर्टेनिटीज थी उसके वजह से एक एंजाइटी बिल्डअप हो रही थी. अब उस चीज में आपको एक प्रैक्टिस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, ये पूछना कि इस सिचुएशन में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं और क्या नहीं कंट्रोल कर सकता. Because most of the times, if you see, Ronak, we end up focusing on things that we cannot control, and we end up feeling miserable, right? So I started validating my emotions, and I started focusing only on those things which I can control. Things which you cannot control, just leave them. Because if you keep on focusing, अगर आप उन चीजों पे फोकस करते रहोगे जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो क्या होगा? You will feel miserable, because you will lose all your mental and emotional energy fighting with those anxiety. So when I started validating my emotions, when I started focusing on things that I can control, that's when मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होते गया. उसके बाद ये एक मेंटल ट्रेनिंग हो गई, ये आपकी प्रैक्टिस हो गई. फिर आगे बढ़ के जीवन में कभी भी आप कोई यू हिट अ रोड ब्लॉक, यू हिट अ डेड एंड, या कोई भी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आप सिर्फ ये चीज को याद रखते हो कि इस स्थिति में, इस परिस्थिति में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उसी पे फोकस करूंगा, बाकी सारी चीजों को मैं भूल जाऊंगा, साइड में रख दूंगा. अगर ये एक चीज सब समझ जाए ना, तो काफी स्ट्रेस कम हो जाएगा. क्योंकि स्ट्रेस ज्यादातर उन चीजों से आता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते जीवन में, और फिर भी लगे हुए हो उसको कंट्रोल करने में, वहां से ज्यादा स्ट्रेस आता है. यस रौनक. डेफिनेटली एंड एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि एक चीज जो मैं एज अ इनसाइट नोट कर रहा था, ऑल ऑफ द टाइम वी आर लुकिंग फॉर आउटवर्ड्स, चाहे काम हो, चाहे वर्क, फैमिली, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ द वैलिडेशन. कि भाई हम अगर इवन फॉर अ मोमेंट, जैसे अभी जर्नी का जिक्र हो रहा था, हरिद्वार की बात हो रही थी, तो इवन वहां भी हम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सो वी आर लुकिंग फॉर आउटवर्ड कि वहां फोटोग्राफ्स होंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, स्टेटस पर शेयर करेंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स विल हैपन. डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड कोर एलिमेंट ऑफ लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड. बट डेफिनेटली जब आप वहां उस मोमेंट में हैं, देन यू हैव टू बी योर इनवर्ड, कि आप उस किस फीलिंग से गए थे या किस इन्वॉल्वमेंट के पर्पज से आप उस इवेंट में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दैट इज प्राइम इम्पोर्टेंट. और जब आप इनवर्ड अपने आप को लुक करते हैं, जब आप अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं it's all about कि आपको समझ में आता है कि what is the important element which you can control on and you cannot control, and definitely then that helps you in relieving your stress and lowering down your stress.
So that is quite important, and definitely coming to Deepa for uh, uh, her remarks over like how she has particularly what I can say the gone through her journey in terms of the arts and drawings or paintings, whatever, in and in terms of expressing her emotions. Yeah, so sure. Actually, अगर मैं बात करूँ मेरी जर्नी की तो it seems like very funny with the beginning, because I was the science stream student first. So till to the graduation, I did my graduation in science stream, and till to my graduation, I just always just fight with my mind ki what I am doing with it, because I have just lots of interest with my childhood in paintings also. So मेरी पेंटिंग्स में, डांसिंग में, सिंगिंग में, कुकिंग में, इन सब चीजों में थोड़ी ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा। तो हमेशा मैं इन चीजों में लगी रहती थी, और मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करते थे साइंस फील्ड के लिए, बिकॉज आई वॉज गुड इन समवेयर, आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स, वेरी गुड। तो उनका हमेशा से था कि नहीं, अगर आपका बायो अच्छा है, आपका केमिस्ट्री अच्छा है, आपका फिजिक्स अच्छा है, तो आपको एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा करने को मौके मिलेंगे, या आप बहुत अच्छा कैरियर इंप्रूव कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, आपके लिए क्या हाई पॉइंट हो सकता है, आपको नहीं पता होता है किस चीज में लाइफ में स्कोप ज्यादा है। ठीक है। तो कभी कभी जब पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं, अगर इन्होंने बोला है तो इन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी, इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो समहाउ वो थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे, तो वो सही होंगे। ओके। तो मेरी साइंस स्ट्रीम के बाद से मेरे माइंड में हमेशा से ये चलता रहता था, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ रही हूँ तो भी मेरी ड्राइंग उसमें चालू है, और मेरी मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, उसमें भी डायग्राम है, तो मेरी उसमें भी पेंटिंग चालू है, मैं उसमें लाइंस देखती थी, मैं उसमें कहीं भी कोई कर्व आ गया उसमें भी मेरी डिजाइनिंग चल रही है, उसमें अगर बायो में नॉमेनक्लेचर आ गया तो उसमें भी मेरी कोई ना कोई क्रिएटिविटी चल रही है। तो इन माई स्कूल टाइम मेरे एक टीचर थे मैथमेटिक्स एक्चुअली, और मैं ऐसे एग्जाम टाइम में ही मैंने एग्जाम की नोट पेपर पे ही मैंने मैथ की नोट पे मैंने पेंटिंग कर दी, एंड ही वाज वेरी एंग्री कि ये मैथमेटिक्स का पेपर है और आपने ये पेंटिंग किया है, तो उन्होंने मेरी कॉपी फाड़ दी। तो दैट मोमेंट आई वाज जस्ट ब्रेक डाउन कि ये क्या हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज जब आप ऐसे एज ग्रुप में होते हो, क्योंकि सारी कम्युनिटी आपके साथ में बैठी हुई है, सारा टीनेज आपके साथ में बैठा हुआ है, पूरा ग्रुप आपका, पूरा हॉल भरा हुआ है, और आपके साथ ऐसा हुआ, तो लाइक वेरी एम्बेरसिंग कि ये नहीं होना चाहिए था। तो फ्रॉम दैट मोमेंट मैंने घर आई, मैंने पापा को बोला अब मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकती, बिकॉज कभी कभी आपको ना छोटी सी चीजें भी ना, ऐसे इंसल्ट भी आपको ना कहीं आपको नहीं पता होता है कि वो इंसल्ट भी आपके लिए हो सकता है वो आपको कन्वर्ट कर दे सक्सेस में। आप उस चीज को ऐसे फील कर लो कि नहीं, अभी ये हो गया, अब मैं ये स्कूल चेंज करूंगी। नो, आपको स्कूल चेंज नहीं करना है, आपको पता है कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं, आप उस फील्ड में अपनी पूरी एनर्जी पुश कीजिए। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि अगर आपको उस चीज में फेलियर मिला तो आप जस्ट कीप डाउन योर सेल्फ, और बहुत शांति से बस ये सोचना होता है कि अगर मैं इसमें फेल हो रहा हूँ तो मेरी गलती कहाँ है, और अगर मैं खुद को बहुत अच्छा कर सकता हूँ तो मैं किस स्ट्रीम में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो दैट मोमेंट आई जस्ट डिसाइडेड जस्ट टू मेक माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, कि अब तो यहाँ से मुझे मेरी आर्टिस्ट की जर्नी ही स्टार्ट करनी है। तो फ्रॉम दैट टाइम आई जस्ट डिसाइडेड माई सेल्फ। तो फिर मैंने वहां से मास्टर्स मेरा पेंटिंग से किया। देन फिर मैंने बहुत ज्यादा, और फिर ये था कि मेरा बचपन से दीदी या फिर माहौल को देख देख के आप रंगोली बनाना, मेहंदी करना, ये सब करना, तो वो आर्ट में थोड़ा सा ज्यादा माइंड ऐसे मेरा इन्वॉल्व था। वही चीज मैंने पैशन में ला दी। पहले वो चीजें मेरी हॉबी में थी हमेशा से। अगर आपको ये लगता है कि आपको अपने पैशन को हॉबी बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें अपना उतना टाइम देना पड़ेगा। आपको उसका फंडामेंटल, उसका बेसिक्स, उसकी चीजों की पूरी फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी प्रोफेशन में अपना फर्स्ट स्टेप रख रहे हो, तो सीधी सी बात है, उसका लैक ऑफ नॉलेज आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच लाएगा। ओके। तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट से किसी चीज में आगे नहीं बढ़ना है। उस चीज के अगर आपको इंटरेस्ट है तो सीधी सी बात है, उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर किसी चीज का आपको थोड़ा भी नॉलेज है ना, अगर आप उसे और जानने की कोशिश करते हो, तो डे बाई डे हमारा माइंड ऐसा सेट है ना कि अगर हम किसी चीज के बारे में, अगर हमें थोड़ा पता है और हमारा माइंड सोच रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क कोई आया है, तो हम उसमें और ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमें और चीजें पता चले।
हमें ज्यादा चीजें पता चलती है तो हमारा खुद का माइंड सेट हो जाता है कि हमें उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है वो डेटा और जानने में। तो उस चीजों को जब आप अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में लेके आते हैं, अपने इंटरेस्ट को लेके आते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज जोर जबरदस्ती से करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेशर बढ़ेगा, आपको नेगेटिविटी आएगी, आपसे जोर जबरदस्ती से काम कराया जाएगा, आप सिर्फ शायद पैसे कमाएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता आपको कोई सुकून मिलेगा। तो मैं टीचर बन गई लेकिन मुझे सुकून नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं एकेडमिक्स में आके मेरे प्रैक्टिकल को मैं छोड़ जा रही हूँ। मतलब मेरा टाइम रूटीन ऐसा हो रहा है कि मैं अगर जॉब में जा रही हूँ तो मैं मेरी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कैरियर की चीजें भी बीच में आती हैं, जब आप ऐसी चीजें सडनली डिसाइड करते हो कि नहीं अभी मुझे ये सडनली ये चीज क्विट करके दूसरी चीज में पैर रखना है, तो कैरियर की भी चीजें बहुत ज्यादा आपको ऐसे परेशान कर देती है कि नहीं अचानक से आप इस फील्ड में आए हो तो आगे आपका कैरियर क्या होने वाला है। तो हाँ, ये चीजें भी मैटर करती हैं कि आपके पास एक अच्छा गाइडेंस होना चाहिए उन चीजों के लिए जहां आप जाना चाहते हैं। उन चीजों के बारे में आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए। आपको नहीं पता है, आप किसी ऐसे, गूगल है अभी तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा इजीली आपको आंसर कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नॉलेज को, अगर आपको किसी भी चीज में इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो उन चीजों की नॉलेज आप गेन कीजिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें आपके लिए सही हैं, आप उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट दे सकते हैं, तो जस्ट गो विद दैट स्ट्रीम। आई जस्ट से कि उस टाइम आप अपने सिर्फ मन की सुने। आपको आगे जाके आपको पता है कि आप उसमें अपना कितना पोटेंशियल दे सकते हैं। ओके, कोई जोर जबरदस्ती से आपको कोई काम नहीं करा सकता है। तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि मैंने उस टाइम पे, मुझे लगा कि अगर मैं मेरा डिसीजन ले रही हूँ तो ये मुझे पता है कि मैं मेरी लाइफ में कितना अप जाऊंगी कितना डाउन जाऊंगी। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैंने अपना स्टेप लिया है, मैंने डिसीजन लिया है, तो मुझे अपनी लाइफ को कैसे लेके जाना है। तो फ्रॉम दैट डे आई हैव डिसाइडेड कि अब मुझे नेट निकालना है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे इसमें नॉलेज आ गई है, मैं मेरा प्रैक्टिकल चालू रखती हूँ। तो मैंने कभी भी अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। मैं किसी भी सिचुएशन में आई, आज भी मैं डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। इवन मुझे टाइम हो या ना हो, पीएचडी में कितना भी कितनी भी मैं इन्वॉल्व हो जाऊं, डेली मुझे पता है कि मुझे उसमें 2 घंटे देने हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज में आप इतने क्रेजी हैं कि सीरियसली आपको वो काम करना ही है, तो आप कितने भी बिजी होंगे, आप उस चीज के लिए अपना टाइम निकाल लेंगे। So that's why I'm here, I think. So yeah, that's from my side. Definitely, Thank you. definitely, it's definitely, during the whole talk which you were mentioning, I was just noting one of the point which I usually talk in a funny manner जब students से interact करता हूँ, just to give them the career guidance. So मैं एक चीज जरूर मेंशन करता हूँ कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इट मीन्स कि आपके पास सारे उनके खुले हुए हैं। इट मीन्स कि आप साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप आर्ट्स लॉ कुछ भी करना चाहते हैं, आप हर चीज कर सकते हैं, आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं। इम्पोर्टेंट इज कि एक बार अगर आपने साइंस लेके गलती कर ली, आपको लगता है, तो दूसरी बार आप गलती ना करें साइंस के बाद, जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिसीजन ले रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, डेफिनेटली जब किसी के प्रेशर से हम घर में कुछ काम करने के लिए भी राजी नहीं होते, तो हम किसी के प्रेशर से एक अच्छा खासा करियर, 20-25 साल 40 साल का करियर बनाने के लिए, आई डोंट थिंक कि हाउ वी बिकम रेडी फॉर दैट। So let's come to the conclusive remarks on this discussion, and then we will come to the announcement of results. जिसका I think participants काफी eagerness से wait कर रहे हैं. So as a conclusion, definitely you have to be, if you are crazy about something, definitely you have to put your all energy in that direction. And one thing which I take insight from the conversation of Deepa की, take responsibility. अगर आपने डिसीजन लिया है, देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एल्स डेफिनेटली फिर आपको अदरवाइज किसी का डिसीजन मानने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा, इफ यू कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड डेफिनेटली जैसे आलोक ने कहा कि कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल एंड लीव एवरीथिंग एल्स, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब आपको जरूरत भी नहीं उस चीज की चिंता करने की, वो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, विद इन एन आवर और विद इन अ डे यूनिवर्स उसकी टेंशन ले लेगा और काम कर देगा। बट यू हैव टू ओनली टेक कंट्रोल ऑफ व्हाट इज कंट्रोलेबल फ्रॉम योर साइड। सो एज अ कंक्लूजन एक्सक्यूज मी रौनक सर। यस यस सौम्यदीप यू। हाँ सर, मैं सर और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हम सबको एज ए स्टूडेंट की तरफ देखना चाहिए कि आर्ट का स्टूडेंट है हम लोग। और मैं जब स्कूल में छोटे
था बहुत। तो मैं रामकृष्ण मिशन में पढ़ता था, तो मेरे को एक चीज सिखाया गया था कि एक विद्यार्थी कैसे होता है कि ककुतिष्ठा वकोध्यानम शयन निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी। तो इसका मतलब होता है कि पहले ककुतिष्ठा, जिसका मतलब होता है कि एक क्रो के जैसे कोशिश करने वाला, कि जो हार मान ही नहीं रहा है एट द एंड तक, कि हमें अगर सच में करना है उस चीज को, अगर डिफिकल्टी सारे कितने भी हो, चाहे हमारा पेरेंट्स से ही क्यों ना हो डिफिकल्टीज, हमें वो कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो वको ध्यानम, हमें जिंदगी में अगर वक्त क्या करते हैं कि अगर किसी भी चीज में ध्यान लगा रहा है तो छोटे मोटे चीजों को बहुत ज्यादा पास ऑन होने देते हैं और बड़े चीजों के लिए वेट करते हैं। अगर हमें जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है तो हमारा जो जिंदगी में छोटे छोटे डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सबको हमें उससे उभरना बहुत जरूरी है। अल्पाहारी, हम दिन में क्या ले रहे हैं, किससे क्या सीख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और अगर हम ज्यादा ही खराब चीजें कंज्यूम करने लग जाएंगे तो क्या होगा कि हम कभी भी ये जो प्रॉब्लम है सोसाइटी का, इस प्रॉब्लम से उभर नहीं पाएंगे। चैन निद्रा, हमें बहुत ज्यादा अलर्टनेस होना चाहिए, जो जैसे डॉग्स का जैसे होता है कि बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं। एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए कि सोसाइटी में चल कहाँ रहा है, उसके साथ कैसे वो अपने आप को उसी टाइम का जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे वो समझ सकता है, कि कितना ज्यादा उसके अंदर वो चीज की तरफ फीलिंग्स आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रहा है, वो कैसे वो सॉल्व कर सकता है। और गृह त्यागी, हमें हर किसी को अपने कंफर्ट जोन छोड़ के निकलना सर बहुत जरूरी है, मेरे को लगता है। क्योंकि अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है तो उसको छोड़ना पड़ता है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर को भी देखा जाए तो उन्होंने अपना अच्छा खासा जमींदारी छोड़ के सिलाई धाए में जाके अकेले एक घर में बंदी बन के अपना लाइफ में जो जितना लिखना था वो लिखे थे। अगर वो अपना जो फैमिली का जो सुख था उसमें अगर वो बैठे रहे थे और अगर सारे चीजें जैसे मजे में बाकी लोग जी रहे थे वैसे जीते, तो शायद उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलता जो गीतांजलि के लिए मिला था। तो हमें हर कीमत पे अपने आप को दांव पे लगाना, और कैसे हम वो चीज कर पाए, कैसे हम वो प्यार को सामने लेके आ पाए जो सोसाइटी की तरफ है, वो करना सर बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट रहना बहुत जरूरी है, हम्बल रहना बहुत जरूरी है, तभी जाके कोई आर्टिस्ट बन सकते हैं। अच्छा, मेरे को लगता है सर। Definitely, definitely, Somadeep, to cover it all from my side. So definitely, it's a good summary. Like one needs to be a student throughout his or her life to grow in his or her life, and definitely जैसे आपने कहा कि comfort zone छोड़ना. So और एक चीज और, it's not only about art or story or any profession. It's like कि अगर आपको अपना सच पता करना है, then you have to come out of that comfort zone, and definitely you have to walk on the journey alone and discover your truth. Whether it is, that is what it's all about. Express yourself to reinvent yourself. So definitely express your emotions in their original form. Don't think कि जैसे वैलिडेशन की बात आई थी आलोकित है कि नो, डोंट एवर थिंक कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ कर रही हूँ, whether it is in terms of creativity or in terms of profession or in terms of personal work, कि just like कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो किसी को क्या लगेगा, किसी को क्या लगेगा, before that it matters how you feel, how you get transformed in your life. So that was all the purpose of express yourself to reinvent yourself. And now let's come and now the time has arrived to felicitate some of the exceptional entries from all the categories of Celebrate Life with us as winner and runner up in respective categories. And as it is said, जो दिखता है वही बिकता है. And yes, it is somehow true too. We all usually connect with the visuals or expressions first before connecting with the words, isn't it? So to begin with, let's start with the result announcement for artworks and paintings, followed by photography. And here we go with presenting top 5 entries from artworks and paintings along with their description. And let's guess which one could be the runner-up. So if anyone wants to share their insight, like which one they find as the runner-up. So Abhi, I think slides for top 5 entries of artworks and paintings are going to run. You can move the slides, Abhi, little bit. So just stop at this slide. अब अगर आप if you will see this particular picture, the previous slide, अभी previous slide. इसके पहले वाली.
I think there is some leg in. Otherwise, these all are the paintings which are reflecting the emotions. And the previous drawing, which I was mentioning about childhood, is in fun itself. So that was depicting the kind of emotions one is having during the childhood. Because childhood is something without any worry. You are doing what you really want to do. Yes, Avi, I can understand the issue of network. No issues. So yes, this one picture I was talking about, childhood is fun in itself. So this is the kind of emotion one can reflect, and definitely these are the kind of true emotions which I value the most. How you are reflecting and how you are going through the transformational journey. So Abhi, you can continue with the presenting all five entries, and let's see who is the runner up, if audience is trying to guess. Otherwise, I will request then our judges to announce the results. So I think these were the artworks and paintings for your guess. And if anybody wants to guess, then they may type their response then in the chat box. Or I would like to request our judge, Ms. Deepa Gupta, to announce the name of runner-up for artworks and paintings. Oh, so there is one guess that childhood is fun in itself. That is the winner. Let's see who is the winner and runner up. So let's hear it from our judge, Miss Deepa Gupta, who is the runner up for artworks and paintings. See, first of all, I just want to congratulate all the participants who just got the part in this competition, like storytelling, like painting, like artwork, like photography. So first of all, very very well done. If you done this job, very grateful. So doesn't matter कि कौन विनर है ओके द मैटर इज कि आपने विन करने के लिए अपनी सोच को इतना ज्यादा पुश किया अपने माइंड को इतना ज्यादा पुश किया कि ऐसा क्या बनाया जाए ऐसा क्या एक्सप्रेस किया जाए जो जजेस के माइंड तक जाए ओके सो आर्ट का सबसे अच्छा मैसेज यही है कि आपका आर्ट फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आर्ट फॉर्म हो आर्ट वो है जो भी आपने प्रेजेंट किया वो सामने वाले की माइंड तक जा सके दिस इज द आर्ट ओनली. So yeah, this is the time to announce the name of the winner. So yeah, the first runner-up is any guess? Any I guess, think guys? one or Okay. two guesses are So there. Yeah. yeah, so the runner-up are here. The first runner-up is Mrs. Prajakta Chandrakanta Roy, who just represent with the painting. So please, previous slide, the tiger, the heritage. I think there is a little slow network. I think there is a slide for, yeah. So Yeah. So, Prajakta, you've just done very well done job because not only you just covered the only the Indian heritage point. Obviously, when I just saw your painting, I just find out कि आपने globally जो सबसे ज्यादा issue चल रहा है COVID-19 का आपने उसमें उसको भी रिप्रेजेंट किया है आपने उसमें हंटिंग को भी लिया है आपने उसमें सेव द एनिमल्स को भी लिया है सो आपने उसमें हमारा नेशनल एक जो बोलते हैं नेशनल सिंबल वो भी दिखाया है एंड एंड द पॉइंट इज कि आपने उसमें कोई कलर कॉम्प्लेक्स का ऐसा कुछ ज्यादा नहीं किया है फिर भी द इफेक्ट ऑफ द पेंटिंग जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस उसमें यूज किया है जो आपने उसमें डूडल आर्ट किया है दैट इज वेरी गुड एंड जो आपने ओवरऑल अपना एक व्यू दिया है आपका सिर्फ इंडिया को लेकर नहीं सिर्फ किसी दूसरी कंट्री को लेकर नहीं आपने ग्लोबली चीजों को दिखाया है तो उसमें काफी सारे इमोशंस आपने सिर्फ एक पेंटिंग्स में दिखाए हैं सो जो कि मुझे बहुत ज्यादा टच किया सो हमेशा से मैं मेरी पेंटिंग्स में भी यही चीजें देखती हूँ कि मैं सिर्फ एक टॉपिक पे ना जाके अपने एक टॉपिक में काफी सारे इमोशंस को दिखा सकूं okay so very good and very well done and many congratulations to you and the second one is Miss Samiksha Singh. Yeah, Miss Samiksha Singh. yes, yes, Sir, yes. can you please? Yeah. So Abhi, if you can change little bit slide. Otherwise, I think there is a little slow in network. So because of which It's okay, sir. there is It's a, okay. So okay. Samiksha Singh.
यू आपका जो पेंटिंग है आपने उसमें अपनी इनर फीलिंग्स को दिखाया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सेकंड विनिंग. एंड आपकी पेंटिंग में मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टफुल लगा कि आपने किसी एक कलर को लेके काम नहीं किया है. आपने उसमें सारे कलर के वेरिएंट्स दिखाए हैं. आपने जो आर्ट वर्क किया है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेंटिंग के साथ साथ में डिजिटली वर्क मुझे ज्यादा लगा. एंड जैसे कि एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जैक्सन पोलॉक, वो एक्शन पेंटिंग करते हैं, आपने उसमें उनका भी फॉर्म दिया है. और एक आर्टिस्ट हैं अमृता शेरगिल, आपने कहीं कहीं उनके जो पैच वर्क्स हैं, जो उनके कलर थीम्स हैं, उनको भी आपने उसमें दिखा है. और रेनबो कलर्स भी आपने उसमें दिखाए हैं. तो जो आपने अंदर की इमोशंस दिखाई हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे मन में कभी भी किसी एक इमोशंस को लेके चीजें नहीं चलती हैं. तो कभी हमारा मन अच्छा होता है, कभी अपसेट होता है, कभी अप एंड डाउन कुछ भी सोचता है, दुख होता है, खुशी होती है. तो आपने एक रेनबो कलर से उसे पूरा रिप्रेजेंट किया है. उसमें एक मुझे एक खुद में मैं बताती हूँ कि मुझे उसमें रिप्रेजेंट आपका दिखा कि एक बटरफ्लाई है जो कि हमारे मन को दिखाती है. ओके, तो जिसकी काफी सारे कलर्स हैं, जो कभी खुशी है, कभी गम है, काफी सारे मौसम बदलते हैं. ठीक है, तो आपने जो अपनी इनर फीलिंग दिखाई मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा उसका. एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिस. सो या फ्रॉम माय साइड मेरे लिए तो Yes. सारे ही विनर थे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, बट यू बोथ वर वेरी गुड देयर. थैंक यू सो मच. So definitely many congratulations to Prajakta and Samiksha, and definitely in Samiksha's drawing and Prajakta's, definitely the kind of clarity they have presented through their artwork, kind of color combination and all that were appreciable. And now we are presenting top five entries from photography along with their description, and let's see again which one could be the runner-up and winner. So Abhi, try to change a little bit. Okay, I think there might be some issue with the screen presentation. So let's proceed towards the announcement for story writing, and then we will come back to the photography if the network permits. So as visuals are important to connect, observe, and feel, associated captions, words, or messages add the clarity to them. In the life between birth and death, joy and sorrow, failures and success, what keeps us alive and moving are those good and not so good experiences recorded in various forms of writing. And when these writings are served after dipping them in the fonts of story and poetry, they create magic and have the power to pierce through someone's soul to leave an imprint in their heart for a lifetime. With this, let's start with the result announcement for story writing, followed by poetry writing. And I think the screen is visible. So let's come back to photography. Abhi, am I audible? Just let me check once. I guess we have the photos. Yeah, we have photos. That's why I'm asking him to represent all the photographs. Yeah. So if I'm audible, then I think so you can present all the photographs, Abhi. Yeah. So these were the photographs which were submitted by the participants, and these were the top five photographs. So let's see who could be the winner and runner up. Let me leave it for audience to guess it for 10-15 seconds, and then we will announce the results. And out of these all photographs, I couldn't say any one or two or three or four or five. Every photograph is saying something with his message, as it is evident through the Kusad photograph, how two different generations are meeting and
what I can say, the enjoying the activity. So let's see who could be the winner and runner-up. And there is, I think, one guest in the chat box as well for the Ajanta. And now let's see who is winner and who is runner-up. So again, because of network, I think Somati got disconnected. So let me take this privilege to announce the name of runner-up for photography and winner for photography. So the runner-up for photography is Miss Azonta Narzri, who has shared the photograph with a very deep message for education. How a girl looking outside the school and trying to see inside, that if she could be the part of a school and if she could be the part of what I can say, the group of students sitting there to just have some insights inside from inside. So Ajonta is the runner-up in the photography, and Neha Sharma is the winner for photography. And her photograph was having a message like value of freedom. So the one who has not been in the cage doesn't know the value of freedom. That was his her full message through her photography, and that I appreciate her for this wonderful photograph. And once again, many congratulations, Ajonta and Neha, for being the runner-up and winner for this photography competition. And now let me again come back to the part which I was trying to tell. So in the life between birth and death, joy and sorrow, failures and success, what keeps us alive and moving are those good and not so good experiences recorded in various forms of writings. And when these writings are served after dipping them in the ponds of story and poetry, they create magic and have the power to pierce through someone's soul to leave an imprint in their heart for a lifetime. With this, let's start with the result announcement for story writing, followed by poetry writing. And again, for story writing, I will again take the privileged to announce the results as Kesar ma'am was unable to join because of some other priorities. So in the story and poetry, it is little difficult to present of five entries here itself because they are in the written form and they are the long form of writings. So it was difficult for me to decide like how to represent the all five top five entries. So those entries can be seen through our website and the anniversary souvenirs we will launch in a meanwhile. So now let me directly share the results. And runner-up for the story writing is Mr. Jismal Jalal, who has written the book, the story, The Unwanted Book. And one of the thing I wanted to share as an insight from his story that is quite important. How a person was selling his own story, his own poetry books, and was in a fair, and then he was having a pile of poetry books, and then was trying to sell his own books, and that was having a deep message that something which we buy, it is not important that is necessary to buy or not necessary. Sometimes we should do things for the benefit of others, for the betterment of others, for the transformation of others. And the winner for story writing is Miss Bismaya Jalal. Through her story Responsible Rita, she has tried to define that how an individual should try to take responsibility for the work in his personal and professional life, and how such kind of things, when what I can say, the provided opportunity being a child, can help in growing tremendously throughout their life. So that was her message through the story. And now I would like to request our judge, Mr. Alok Song, to announce the name for runner-up and winner for poetry writing. Thank you, Ronak. Thank you. First of all, as Deepa rightly said, that it really doesn't matter who is the winner, because see, this might sound cliche, but honestly, let's understand. There, all of you are going to experience and go through various competitions in life, right? Various competitions. You are just starting. Throughout your life, you will be going through various different competitions. But understand this fact that more than the result, it is the process that transforms you. More than the result, it is the process that transforms you. It really doesn't matter what lies at the end. It really doesn't matter whether you reach there or not.
What really matters is what you become in the process, what you become in the journey, right? So what do I really mean by this? See, the thing is, you wrote all these poetries, you submitted your paintings, your artwork, your photographs. A lot of things happened in you when you were doing that. You became creative, you started thinking out of the box, you pushed yourself to the next level, you came out of your comfort zone. All that matters. All that matters, because those little tiny things, that tiny burst of efforts that you put in, that ultimately builds yourself and takes you to the next level, right? So never ever get disappointed by the result. Just think of the process. What were you yesterday and what you are today? And when I come to the poetries, let me tell you, it was really difficult for me as a judge to pick up one particular thing or to rate one better than the other, because see, poetries are not black and white like paragraphs or sentences. They come from heart, right? There's a lot of thought process that goes into it. There's a lot of creativity that goes into it. There's a lot of imagination that goes into it. It is not a statement, but it is in itself, it is something magical. So to announce the runner-up in the poetry competition, it is Ms. Juhi Khanal. साथियों कुछ कर गुजरते हैं देश के लिए. So this is by Ms. Juhi Khanal. She is the runner-up for poetry writing. Very well written, and she has written about India, about the country, to do something for the country. और इतने अच्छी तरह से उन्होंने पेट्रियोटिज्म को उसमें व्यक्त किया है, उसको दर्शाया है. At this age, Ronak, this is what we need in our youngsters. The kind of patriotism, the kind of gravitation towards the country. This is what we need. And when we see this happening, it really feels motivating and inspiring. So many congratulations to Juhi for writing this Sathiyo Kar Guzarte Hain Desh Ke Liye. And having said that, coming to the winner, and I'm humbled and I'm so very happy to announce this little girl's name, who has written an amazing poetry, and she is. So you know what, Ronak, I'm really feeling very positive. Really feeling positive announcing her name, because the name of her poetry is Positivity. Yes, it's Gitanjali Thiagarajan. Fantastic, Gitanjali, fantastic. You have done an amazing job. I'll tell you, everyone who is present here should read this poetry, Positivity. I was inspired reading this poetry because the kind of world that we are living in, due to comparison, due to a lot of negativity out there, due to those unrealistic and depressing and suppressing social standards that we are facing on day-to-day basis. Yes, this poetry can give you a ray of hope. So I want all of you to read this poetry, Positivity. The way Gitanjali has written, you should have that positive thought in the morning. Be grateful for what you have, and all those little things. That's how you train your mind to be positive. So once again, fantastic. A lot of congratulations, and I congratulate for the journey that you're going to take from here on, Gitanjali. Thank you very much for writing that poetry. Yes, thank you, Ronak. Over to you. So many congratulations, Juhi and Gitanjali, once again. And once again, many congratulations to all the winners and runner-up. All your rewards will be dispatched to you within few days after the event is over and will be notified accordingly. And definitely, since the results has been announced and some of your exceptional entries got rewarded, it doesn't mean that other entries were not good enough. As mentioned in the message given by one of our judges, Mr. Alok, it really doesn't matter who wins. What really matters or what really counts is the kind of transformation
that you are experiencing in the process, what you become after going through the journey. And that's why we have decided to present all the finest entries of this competition in our anniversary souvenir. So it is the time, and the time has arrived to present and launch the first anniversary souvenir of Gyaannirudra with the name Express Yourself to Reinvent Yourself. This anniversary souvenir is featuring the finest entries received for all the categories of Celebrate Life with Us, along with the blessings from judges and experts. Hope this souvenir will serve its purpose of spreading smiles and happiness in the community. And I would like to also thank one of our digital marketing interns, Kriti, for designing the souvenir and making it memorable for us. A print copy of it will be made available to all the judges and awardees, while the digital copy of it will be made available through Amazon Kindle for everyone. Further details about the same will be communicated shortly. So this is the anniversary souvenir, and let me give, I think, 1 minute or few seconds for Abhi to present this anniversary souvenir in front of you all.
So I think Avi has presented this anniversary souvenir, and definitely it will be made available, as I said, and will be communicated the details shortly. And now this is the moment to appreciate the effort of someone whom I admire the most in our journey. And as it is very well known that nothing can grow big without putting a seed. And we appreciate Mrs. Neha Das for her efforts and generous contribution in planting the seed of Celebrate Life with us at Gyaannirudra and making our journey of empowering youth more meaningful and memorable. This Gyaannirudra Anniversary Special Award is our small attempt to recognize her valuable contribution to our journey. And in simple words, it was her idea that not only story writing, which we have covered in our first anniversary event, so not only story writing, we should also provide the opportunity to the youngsters for story writing, poetry, artworks, paintings, and photographs as well. So because of her idea, I could do this much for the community. So thank you, Mrs. Neha Das, for her generous contribution in planting the seed at Gyaannirudra. And now, with this, we have come to the end of the event. And here I would like to thank Ayush, Ayush Verma for his tremendous contribution in nurturing the seed of Celebrate Life with us through his efforts in web development. I would also like to thank Zero Monk for sponsoring the cash prizes of the competition and their valuable support in making this event a grand success. A big thank you to all the judges, participants, guests, and experts for their contribution and giving us a reason to celebrate life. At the end, with the wishes of smiles, happiness, and love, I, Ronak Gupta, seeking your permission to sign off. Thank you once again. Thank you all.